India is the world's second most populated country and one of the world's fastest growing economies. Despite tremendous improvement in other sectors, healthcare performance remains inadequate. As per Medical Council of India in 2020, there are 12 lakh doctors for 138 crore people in the country, which estimates to 1400 people per doctor. In 2020, during the pandemic, when the entire world was at a pause and everything turned upside down, the nation depended upon the doctors even more. It is needless to mention about the amount of pressure and stress the doctors would have gone through and are still going through. When I was a kid, my parents dreamed me to become a doctor. But when I saw them in my teenage, they suffer from cancer. So they were admitted in different hospitals, they had different interactions with different patients, different doctors, and their behavior, those things inspire me a lot. Actually, आमे दुई जन कैंसर सर्वाइवर आमे दुई जन कैंसर रे पीड़ित थिलु आउ अतीत रे बहुत कष्ट स्टेज देकी लाइफ रो गति करिछु तारी भितरे आम पुओ ए सब जिनिस देखिकरी आम मानकर परिस्थिति देखिकरी सी ता माइंड मेकअप करिछि जे नाइ मो फ्यूचर रे गोटे भलो डॉक्टर हेबी एवं लोक मानकर सेवा करी. When you join different coaching centers, there will be facing different competition. You will understand what is the scenario and where you stand in the academic area. And then when you clear the NEET and enter the medical college, you will get to exposure of clinical exposures, patient interaction. You have to understand their language. What are they saying, their difficulties? They are not saying in scientific manner, so you have to understand it, you have to analyze, and you have to just go on writing their histories and how to diagnose. Then you have different co-curricular activities. Along with that, you have to study that are like just a vast syllabus. Medical life is totally hectic, but yes, you have some time spans so that you can just cope up with all them by like listening music. You can go for some curricular activities, like different organizations are there. Along with that, we have different classes, some extra classes are there. We have teachers, we have faculties who help us. We can just go with them like for the clinical rounds. We can go with them for different patients. So like that's it. Don't touch, don't Side. मास्क नहीं होता है तो लगता है कि कुछ पहना नहीं है, मैंने कुछ मिस हो गया. When I got my first case positive 504, that is after doing 503 cases, and when we are doing the RT-PCR, there is a continuous line up growing upward when it comes positive for the COVID-19. ओडिशार गोटे घरोई क्लिनिक रही भुवनेश्वर स्थित आपोलो हॉस्पिटल लैब साइंस विभाग में ए परीक्षा करा जाई पारिबो बोली आईसीएमआर पक्षरु जारी होइतपा विज्ञप्ति रे उल्लेख रही. देन माय हार्ट बीट बिकॉज़ डबल कि ठीक हुआ है तो
पॉजिटिव आ गया, मैं ठीक ठाक पहनी थी, तो सब पीपी ठीक ठाक पहनी थी, मैं आज घर जाऊंगी कि नहीं, मत जाती हूँ, रह जाती हूँ हॉस्पिटल में, क्या करूँगी। हस्बैंड को मैसेज किया कि मेरा फर्स्ट केस पॉजिटिव आ गया एंड आई हैव पुट पर्सनली दैट टेस्ट, दो टिल नाउ वी हैव completed 40,000 about the test, but that first case experience was वो बहुत मतलब ये था कि कैसे आ गया वो पॉजिटिव, और वो हम लोग ठीक ठाक से किए हैं कि नहीं, और हम लोग ठीक ठाक से प्रिकॉशन लिए हैं कि नहीं, कि हम लोग घर वापस जा सकते हैं, हमारा यूनिट घर वापस जा सकता है कि नहीं इन द ईयर ऑफ 2020 अप्रैल। Many things have been changed. Personal, professional life, working hours becomes increased to more than 30%. 8 hours duty becomes extended to 11 hours, and if though we have the leave, but we cannot take the leave. We are not allowed to take the leave when we need it, because there is a shortage of staff. Due to staff, they were gradually affected with the COVID-19, and due to shortage of staff and the workload, we could not take leave. डोज अधिक आपण मान जानछथि निश्चय कि साइड इफेक्ट रही तेणु जो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर प्लान लीव नाम का कोई चीज़ नहीं है हमारे लाइफ में कि ये चीज़ प्लान करेंगे 2 महीने पहले कि यहाँ पे घूमने जाएंगे। 90% व्हेन वी अप्लाई लीव इट इज़ कैंसल्ड। मेडिकल प्रोफेशन का यही दिक्कत है, और शायद बच्चे लोगों को हम ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग यूजुअली बात करते हैं तो आधे घंटे के लिए रात में 10:30 से 11 या व्हाट्सएप में। जनरली हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज बात करते हैं हस्बैंड वाइफ मैक्सिमम टाइम। मॉर्निंग वॉक, योगा, ऐसा कुछ करने के लिए हम लोगों के पास शायद टाइम नहीं है। अभी शायद लेजी भी हो गया, वो करने का मन भी नहीं है। और जितना थोड़ा टाइम जितना भी मिलता है वो बच्चों का मतलब जो उनका जो होमवर्क, उनका प्रोजेक्ट होता है उसमें चलाया जाता है, उससे अलावा कुछ हो नहीं पाता है। मतलब इससे टाइप ऑफ मोनोटोनस लाइफ। सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, पढ़ाई के लिए बिठाओ, फिर जाओ ड्यूटी करने, फिर आओ, बच्चे को पढ़ाओ, खाना पिया खाओ, सो जाओ। देयर इज नो एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट है मगर वो हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट का एजुकेशन प्रॉपर नहीं है इंडिया में। जैसे पेशेंट लोग समझते नहीं है कि डॉक्टर भी आदमी है, वो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। यू कैन नॉट बी ए गॉड ना, कि यू कैन नॉट गारंटी। इट्स नॉट लाइक थिंग कि आप लोग गारंटी कर सकते हो। और लोगों को लगता है हमने हॉस्पिटल ला दिया तो आप हमें ठीक करके दो। ये कोई मशीन नहीं है जिसको हम ठीक करके दें। सो एक्सपेक्टेंसी लेवल ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी हाई, and we are not so equipped with the instrument also. और इतना डरने के वजह से भी डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों में देखता है कि मैं कैसे सेफ रहूँ, ठीक से काम नहीं कर पाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर कि आप ये करोगे तो लोग ऐसा गाली देंगे, ये करोगे तो यहाँ पे केस हो जाएगा, ये करोगे तो कॉर्पोरेट लॉस में जाएगा। ये सब चीज़ें भी डॉक्टर के माइंड में बैकअप माइंड चलता रहता है, जो आइडियली नहीं चलना चाहिए। एक्चुअली जड़े समस्ते जानवा दरकार जे गोटे डॉक्टर जानी जानी ता पेशेंटर केबे भी माने क्षति करने को चाहिए। मे भी से आम पैसा मैटर हो पारे कौ केस रे में जेकोसी पेशेंट जिते खराब होता कि कौन भी होता केबे भी चाहिए ता पेशेंटर किसी क्षति हो जाओ। पेशेंटर क्षति हेले तार लाभटा कौन हम, तो ସେଇଟା କେହି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଡକ୍ଟର କଲେନି, ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରନ୍ତି ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଇଫର୍ଟ ଦେବା ନା। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଚାହିଁବନି, ଯେତେ ଖରାପ ଯାହା ବି। ସେଇଟା ସମାଜଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଯଥାରେ ଭାଓଲେନ୍ସ କରିକି ଖାଲି ମାନେ
से माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो जे किंबा डॉक्टर हो बहुत क्षति करती से माने हमको पूरा मानसिक भाव में जड़े डॉक्टर ऊपर अटैक है माने आम टोटल डॉक्टर माने आम हारास हो जाऊ जे एमती लोक मानकर बिहेवियर आम प्रति एमती आम केते चिंता करूजे गोटे पेशेंटा ठीक हवापाई किंतु तांकर चिंताधारा आम प्रति एमती बोली आम मनरे बहुत दुर्बल हो जाऊ जे लोक मानकर चिंताधारा केबे बदलिबो। गायनिक सब्जेक्ट रे जी जो माने गोटे पिला जन्म करचंती से माने भाबंती तांकर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी समस्ते भाबंती जे आमे माने किछि किछि एडवाइस समस्ते दौथाती प्रेगनेंसी रु आरंभ करके डेलीवरी पर्यंत समस्ते एडवाइस दियंती जे एटा हेले एटा करिवो सेटा हेले से एमती करंतु सेमती करंतु किंतु से तापरे तांका मनरे गोटे थाए जे डॉक्टर जानि जानि कि सब सिजेरियन करि दउचंती किंतु कॉम्प्लिकेशन जते आमे लास्ट पर्यंत पिलाटा बाहर को सेफली न बाहरला पर्यंत माटा पूरा सेफ है कि न बाहरला पर्यंत हमको बहुत टेंशन थाए जे केमती पिला माँ दी जन जाक भलरे आसी जांतु आउ से मानको मनरे सब बेले संदेह जे डॉक्टर माने एमती आम सहित ठीक रे करिवे कि नाही एमती कॉम्प्लिकेशन केस हला माने तांकू केमती आमे माने ये न दे कि टेंशन न दे कि से माने फील न करंतु से टेंशनटा आमे निज ऊपर को टेंशन नै कि आमे सेटा को ये करके तांकू कला परे जाई कि से माने सैटिस्फाई होंती जे हां ठीक अछि अल्टीमेटली आमे माँ पिला भलरे पाई गलु तो हमको बहुत टेंशन थाए तांको टेंशनटा आमे नहीं जाऊ से समय मन भितर टेंशन रखिकी ऊपर हसिकी तांको बुझेबा को पड़े जे नाई किछि आपण डरंतुनी आमे जेमती हेले भी आपण को ये करके सक्सेसफुल माँ छुआर येटा दब भगवान का दयारू जहाँ आसिया मैडम पाखे आसी पहुँचलु मैडम को ट्रीटमेंट मैडम हमको जहाँ जहाँ भी कहले माने रही आमर ट्रीटमेंट जहाँ मेडिसिन इंजेक्शन नापी कहले आम बहुत खुशी हेलु एवं मैडम गोटे जिनस देखिली मुझे मैडम के आम गोटे पेसेंट हिसाब से देखी ना सब मैडम देखते आमको गोटे निज फैमिली मेंबर हिसाब से आम जिते आसू बिकज आम 2 जन जाक जेहेतु सर्विस अच्छु आम राति आसले मैडम को टाइम देते दिन बेला जो आम आसचु बसबू आम 22 नंबर 25 नंबर थी मैडम देखला पर सांग सांग डाकी नहीं तो आसी आगे देखे जा स्पेशल केयर जहाँ कहती आउ खुशी लगे जहाँ हो भगवान का दयारू 16 इयर्स पर आम भगवान आमको गोटे झील देते ऑल क्रेडिट गोज टू भगवान देन आसिया मैडम। Doctors are placed next to God. This belief leads to unreasonable expectations during hopeless situations. It provides the people with the false hope that they will be cured and leaves them with a sense of happiness which, when broken, makes them blame the doctors and leads to physical, mental and verbal abuse of doctors. Most of the time, doctors leave their personal problems and families aside to be there for their patients. Even if they are physically and mentally exhausted, they give in everything to stay true to their profession. They are not gods, not everything is in their hands, and they don't deserve to be blamed for our losses because they are humans too.